Hello students, good morning, Jai Hind, myself Dr. Manisha Patel. In previous lecture we have discussed about double fertilization. Let's revise it. So this is embryo sac. This is micropyland. So opposite to micropyland there is chalazoland. Okay, now we know that towards micropyland there are three cells, one egg cell and two synergid cells. Towards chalazoland there are three antipodal cells. This is egg cell and this is synergid cells. Okay. In center, two nuclei fuse together and forms polar nuclei. So this is the structure of embryo sac. As we know that when pollination occurs, due to pollination, that pollen grains, they are transferred to the stigma of pistil. When that pollen grain it set on the style, as the style accept it, that means if that pollen is compatible, that means it is acceptable, then that pollen will germinate and it will form pollen tube. So as we know that pollen tube pass through style and reaches towards the micropyland, and here that pollen tube, it passes to male gametophyte. It enters through synergid cells by filiform apparatus and it releases its two male gamete into embryo sac. As we know that one of the pollen grain, that is male gamete or nucleus from the pollen grain, it will fuse with polar nuclei which is located in center and it forms N, that is 3N endosperm nucleus, that is known as a PEN, primary endosperm nucleus, which will when grow, multiplies and form endosperm, which is a reserve food of that embryo, reserve food for embryo. And towards micropyland, one egg cell, it is fertilized by male gamete and it will form diploid zygote, right? Okay, so this is about double fertilization. This is syngamy, this is triple fusion. As two times fertilization occurs, that's why it is double fertilization. So now it is clear for you that in center that endosperm is formed and towards micropyland that zygote is formed, and that zygote when it multiplies and it forms embryo. So keep in mind that towards micropyland that zygote divides and forms embryo, and in center that primary endosperm nucleus, it divides and form endosperm. Is it clear? Okay. So this is about double fertilization. Now let's see the embryo development. So this is embryo development which occurs towards micropyland. This is zygote.
Zygote, it is single cell, but it is diploid. That zygote, which is located toward micropyle and this zygote divides transversely. Remember, this division is mitotic division. That means कि जितने भी cell बनते हैं, all are diploid. Second thing, this is embryo development for dicot plant. This type of development mostly observed in CAPSELA type of plant. So sometimes it is also asked CAPSELA type embryo development, right? So that zygote divides mitotically, but that first division is transverse division. Okay, you know ना transverse section and longitudinal section, right? जैसे कोई इसको अगर हम ऐसे सेक्शन करें तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ, और ऐसे सेक्शन लिया तो दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. रिमेंबर what is transverse section and what is longitudinal section. So this is zygote that is diploid. It divides transversely and forms two cells, right? So first division is transverse. Transverse division. Transverse division. And two cells are formed. Remember, as we know that this is micropyle and this is chalazoland, right? So that cell which is located towards micropyle, that is known as a basal cell, and that cell which is located toward chalazal end, it is known as a apical cell, right? Basal cell or apical cell. Apical cell, it is also known as a terminate cell, right? Now, in next division, the basal cells divide transversely. उसका transverse division होता है, तो समझ लो कि ये बन गए दो basal cells. And apical cell, it divides longitudinally, right? So apical का longitudinal division और basal का transverse division, right? So two apical cells and two basal cells. Now next division, that two basal cells, from two basal cells, the basal cell which is located towards the micropyle, that means this one, it will not divide but remaining divides so many times and forms a mass of cell. See, this is and simultaneously that apical cells also divide longitudinally. So this is one apical cell, 2, 3 and 4, right? So this is 4 embryo cell, right? 4 cells. It is also known as a pro-embryo. That 4 cell condition is known as a pro-embryo. Okay. Now for basal cells, the basal cell towards micropyle and will not divide, and the remaining will divide so many times and forms a chain-like structure. This is known as a suspensor. And the
basal cell which is not divided, it becomes little bit larger and it is known as a haustorial cell. ठीक है. Most important, suspensor is a chain of 20 to 25 cells. So first question arises, what is the importance of suspensor? To remember that due to, like this is endosperm, okay? Now as we know that embryo development occurs towards micropyland. So due to formation of suspensor, that embryo, it moves towards center, right? And where it got nourishment. समझ में आया? सस्पेंसर बन रहा है इसलिए क्या हो रहा है कि जो एपिकल सेल्स है जिसमें से प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो धीरे 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 सेंटर तरफ मूव हो रहा है, जहां पे उसको क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है. दिस इज एम्ब्रियो, सॉरी दिस इज एंडोस्पर्म, राइट? सो दैट प्रो एम्ब्रियो न्यूरिशमेंट उसको मिलता है. कहां से मिलता है? फ्रॉम एंडोस्पर्म विच इज लोकेटेड इन द सेंटर, राइट? ओके. नाउ that upper cell of suspensor which lies in the contact of that apical cells or proembryo, it is known as a hypophysis. The top cell of the suspensor which is in contact with apical cell is known as a hypophysis. Got it? Now this apical cells, there are 4 apical cells. समझ लो कि जैसे पहले 2 सेल्स थे सबसे पहले बिगिनिंग में, उसका लॉन्जिट्यूडल डिवीजन हुआ तो कितने बने? 4 cells. Now again there is longitudinal division but it is towards right angle. मतलब कि पहले ऐसे डिवीजन हुआ तो दूसरा उसके राइट एंगल ऐसे होगा, राइट? सो नाउ वी आर हैविंग 8 cells, right? So 4 और समझ लो कि जैसे ये 8 cells है. समझ में आया? 2 उसका डिवीजन हुआ तो 4 और डिवीजन हुआ तो 8. जैसे ये 6 है बट समझ लो कि जैसे ये 8 cells है. ओके. फिर से एक बार कि जैसे पहले 2 एपिकल सेल्स थे, राइट? अब ये 2 एपिकल सेल्स है, 2 एपिकल सेल्स, ओके? 2 एपिकल सेल्स का राइट एंगल डिवीजन हुआ तो अब बने 4 सेल्स, ठीक है? अब ये 4 सेल्स है, अगेन उसका राइट एंगल हुआ. जैसे पहले ये है तो दूसरा ऐसा होगा तो तीसरा उसके राइट एंगल. तो अब कितने सेल्स बने? करेक्ट, 8 सेल्स, ठीक है? गॉट इट? सो दिस इज 8 सेल. नाउ अब जो ये 8 सेल्स है उसका पेरिफेरल डिवाइडेशन होता है, राइट? तो पेरिफेरल डिवाइडेशन होता है तो अब कितने सेल्स बने? 16, राइट? बट 16 में देख सकते हो आप कि ऐसे डिवाइडेशन हुआ पेरिफेरली तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुवर्ड्स अपर साइड एंड 8 सेल्स टुवर्ड्स लोअर साइड. गॉट इट? वन मोर टाइम. पहले एपिकल सेल एक ही था, उसका लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हुआ तो 2 सेल्स बने. नाउ अगेन उसके राइट एंगल तो 2 में से 4 और 4 का अगेन राइट एंगल तो कितने सेल्स बने? 8 सेल्स. और ये जो 8 सेल्स है उसका पेरिफेरल डिवीजन हुआ तो नाउ वी आर हैविंग 8 + 8 दैट इज 16 सेल, राइट?
Now, from this 16 cells, 8 are located towards upper side, or we can say towards the chalazal side. So that is known as a apical octant. Octant means 8, or it is known as a chalazal octant. And remaining 8, which are located towards base, or we can say micropyle end. So these are known as a basal octant, or it is known as a micropylar octant. Remember that. Okay. So see it one more time. तो जैसे ये ठीक है, सस्पेंसर, ये उसका हॉस्टेडो सेल, ये समझ लो कि भाई हाइपोफाइसिस है. तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So upper 8 towards chalazal end, it is known as apical octant or chalazal octant. The lower one is known as a basal octant, or it is known as a micropylar octant. Clear? This is hypophysis and this one is suspensor. Clear? It's very simple, but it is not fully described in your textbook. Just only figure is given. But remember how the apical octant and basal octant is formed. Now, what is the importance of that apical octant, basal octant and this hypophysis? So, this 2, 3, 4 and this one. So, this is apical octant and basal octant. From apical octant, remember that plumule, patana, what is plumule? Which give rise to shoot system. And cotyledon. Why cotyledon? Obviously seed form होना है तो cotyledon तो बनेगा. This is the development of dicot embryo. So two cotyledon will form and epicotyle, जिसमें से mainly जो aerial portion develop होता है. जो basal octant है उसमें से क्या बनता है? Hypocotyle, that is lower portion, right? Second thing, ये जो hypophysis है वो divide होता है और mostly it forms 8 cell. 1 2 3 4 5 6 7 8, right? उसमें से जो upper 2 cells है they form root cortex and the lower 4 they produce root cap. Got it? The same figure is drawn here. Apical octant, उसमें से plumule, cotyledon and epicotyl form होता है. This is hypocotyle. ये जो hypophysis है उसके जो upper 4 cells है उसमें से root cortex, you know ना, cortex region, outer side region, and from lower 4 cells of hypophysis that root cap and root tip और उसका जो protection करता है that is root cap, right? And remaining suspensor cells will slowly it will destroy it.
Now, actually, how that cotyledon is developed. So this is also drawn here. तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो एपिकल ऑक्टन, अच्छा जैसे अभी आप देख सकते हो कि ये एपिकल ऑक्टन और मतलब कि बेसल ऑक्टन है, तो ये शेप कैसा है, ग्लोब्यूलर शेप। देखो प्रो एम्ब्रियो था, अब कैसा शेप बनना, ग्लोब्यूलर शेप। याद रखना पहले कौन सा शेप, ग्लोब्यूलर, राइट। अब जो हाइपोफाइसिस के सेल्स है वो डेवलप होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, एंड दे फॉर्म्स दैट कॉर्टेक्स ऑफ रूट, and the cells lower hypophysis, they multiply and forms root tip and root pocket जो उसको प्रोटेक्शन करता है, that is root cap. Root cap, because in aquatic plant it is known as a root pocket. Remember जो root tip का प्रोटेक्शन करता है ना, तो in terrestrial plant it is known as a root cap, but in aquatic plant it is known as a root pocket. Okay, so root tip and root cap, root pocket aquatic plants में होता है. Okay, now that basal octant, it divides and forms hypocotyle, and that apical octans, वो सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं बट their शेप becomes bulging, ऐसा थोड़ा बल्ज हो जाता है. यहां पे होता है सेंटर में प्लम्ब्यूल, राइट. तो फाइनली देखने जाए तो ये ऐसे फॉर्म होता है, यहां पे सेंटर में प्लम्ब्यूल, राइट, एंड दिस इज, समझ जाओगे ना, ये root. So after the globular shape, the cells grow and forms heart shape. So then sequence पूछा जा सकता है कि भाई ग्लोब्यूलर शेप के बाद जब डाइकोट में एम्ब्रियो ग्रो होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो कौन सा शेप आता है, तो दैट इज हार्ट शेप. पहले ग्लोब्यूलर एंड देन हार्ट शेप, राइट. नाउ जैसे जैसे ये और ग्रो होता है, राइट, तो ये जो सीड कोट में ये फिक्स होता है, सीड कोट होता है, तो इसलिए उसको स्पेस ज्यादा ग्रो होने नहीं मिलती है, तो उसका ग्रोथ थोड़ा ऐसे हो जाता है, एक साइड पे उसका ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, राइट. सो दैट इज हॉर्स शू शेप. तो ये पूछते हैं तो याद रखना, पहले ग्लोब्यूलर, देन हार्ट शेप एंड देन हॉर्स शू शेप. ठीक है. अब जब हॉर्स शू शेप डेवलप होता है तो ऑब्वियसली दिस आर कोटिलेडन. Why? Because in dicot there are two cotyledon, right? Clear? Okay, तो ये ध्यान रखना, आपकी बुक में ये फिगर दी हुई है, two cotyledon, right? Okay. Now second most important thing to remember कि जैसे ये डाइकोट सीड है, तो कोई भी सीड हो तो सेंटर में होती है एम्ब्रियोनिक एक्सिस. तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एम्ब्रियोनिक एक्सिस. ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस उसके साथ तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस
और उसके साथ ये जॉइंट है, दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये है जहां पे टू कोटाइलेडन जॉइंट होते हैं, उसको बोला है कोटाइलेडन नोब और जंक्शन. दिस आर टू कोटाइलेडन. एम्ब्रियोनिक एक्सिस, उसकी जो टिप है वहां पे होता है प्लम्यूल, राइट? क्यों प्लम्यूल? बिकॉज वहां से सूट सिस्टम अराइज होगी एंड टुवर्ड्स लोअर साइड इट इज रेडिकल. You know radical? From where that root system arises. And the space between that cotyledon knob and plumule, it is known as the epicotyle. Aerial system arise होती है. And the junction, मतलब कि that cotyledon knob and radical, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज अ हाइपोकोटाइल. तो डाइकोट सेट की फिगर पूछे तो ध्यान रखना, दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस, टुवर्ड्स द अपर एंड इट इज प्लम्यूल, टुवर्ड्स द लोअर टिप दैट इज रेडिकल. These are two cotyledon. Why two cotyledon? Because this is dicot seed. That center junction where two cotyledon unites, it is known as the cotyledon knob. That area or the distance between plumule and cotyledon knob is known as the epicotyle, right? And the distance between cotyledon knob and radical is known as the hypocotyle, right? Okay. So this is about dicot embryo. ध्यान रखना, वैसे ये डाइकोट एम्ब्रियो मतलब कि डाइकोट सीड उसकी फिगर हमने 11th में की है, बट फिर भी लेबलिंग में ये पूछ सकते हैं. और यहाँ से ये खास पूछ सकते हैं व्हाट इज ग्लोब्यूलर फॉर्म, आफ्टर ग्लोब्यूलर फॉर्म विच फॉर्म इज फॉर्म, देन हार्ट शेप एंड दैट हॉर्स शू शेप, राइट? ओके. और जो कोटाइलेडन की फिगर है वो दी हुई है टेक्स्ट बुक में, एक बार देख लेना. ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ओके. और प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करना. ओके, थैंक यू.